Okay, so recording is started. Okay, so till now we have discussed about cuspal interlink theory. Okay, and what we had discussed about what is the cuspal interlink theory. Okay, this is a theory about the involvement and commitment and confirmation. Okay, now I have given you some clue about the how it works, and I have given you the which is the favorable cusp and which are the non-favorable cusp. Before proceeding ahead, I will show you one thing with you. So that will make more simple. That will. Okay, he's also here. So I will share one. I will share a blank chart of blank screen. Hope you see the screen. Is this readable? What I've written, involvement, commit, and confirmation is readable, or should I make it little more? I can read it. You can read, or I can make it more broad. Okay. You see, we have studied that this is a study of involvement and commitment and confirmation. Okay. Now, what does it mean by involvement, commitment, and confirmation? What does it really mean? In Vedic, we know that only the planet will give the result. If plant so and so planted in such a house, it will give a result of that particular house. Suppose we just talk about your sun chart. He's having a Dhanu Lagna. Okay. If he runs with a Jupiter period, so he will activate the first house, fourth house, and 11th house. Because Jupiter ruled is Lord of Lagna, ascendant, fourth house Pisces, and it's placed in the 11th house. So first, fourth, and 11th house get activated when his Jupiter period will come. Since he won't get the Jupiter period because on the birth sheet, get the Saturn period only, so he'll not. But he will get the sub period also, Jupiter also. Okay, definitely he will get the sub period in Jupiter, Saturn, or Mercury, Jupiter will get. Okay, but what does it mean in stellar astrology? Now, what the stellar astrology says about this? Suppose he's running with Jupiter period. Jupiter, and I know the Jupiter is Lord of first house, fourth house, and placed in 11th house. This is my limitation in Vedic astrology. If I move further, I need to check the nakshatra also. Suppose in stellar astrology, we need to check the nakshatra also. If Jupiter is placed in Mars nakshatra, suppose it's in the Mars nakshatra. If the Jupiter is the Mars nakshatra, for the Dhanu Lagna, Mars is ruled by which houses? 5 and 12. Sorry? 5 and 12. For 5th house and 12th house. You got a point? Yeah. It's mean in CL theory, what we said that the planet will give the result of its star lord. It's mean the nakshatra lord, star mean nakshatra. So according to CL theory, the planet will give the result of 5th and 12th house. Or where the Mars is placed, where is Mars placed in his chart? Mars is in 5th house, which is retrograded. Okay, we will not see retrogression in cuspal interlink. I first class I told you. It's the Mars in places in O's sign. It's an Aries sign. Yes. It's an Aries sign, so it will give the result of 5th and 12th. Now, I will say that Mars in the dasha of Mangal, Mars, the native star lord, through star lord, it involved 5th and 12th cusp. This is my involvement of the houses. This is the involvement of houses. You understand the concept? Involvement, commitment, confirmation. What will involve? The nakshatra should involve with particular houses. There's an exception also. That is the positional status. I will teach when the speech is also there. So that concept should also need to be clear. I will teach you later. Abhi, I will make it very simple. Very simple. If running Jupiter, if the running dasha Jupiter, the native will activate 5th and 12th house. Okay. So he will not activate 1 4 11 anymore. You see, if it doesn't have a positional status, it
involves 1, 4, and 11. This is the main difference between Vedic and successful intelligence. Okay. Involvement should be through star lord. Okay. Nakshatra should involve for the particular event. Then only the event will happen. If the Dasha Lord or the planet have some positional status, in the next class I will explain the positional status concept also. Okay, then only the Jupiter may involve. There's a certain condition for that. Abhi ke liye I'm not taking Jupiter. In Jupiter Dasha, it will give the result of Mars. Now, what I will do? I said, what is the sublord? Sublord is the ninth division of a planet. Which planet? Nakshatra. Sublord is the ninth division of planet. It means the sublord is the ninth division of nakshatra. So if I make a division of Mars, it may give you to suppose I'm giving example 11. If I divide Mars into 9 division, it may involve these houses also. This we are not going to calculate manually. The software clearly talk about this. Cuspal position is given in the software only. I'm just giving you example, a broad example. For the sublord is Mercury. What about? Now what happened in Jupiter Dasha? What is the promise given by the Jupiter Dasha in his life? You will say, if I read through Vedic, I will say the first, 4th, and 11th houses involved. These are the prominent houses for Dhanu Lagna, Sagittarius ascendants. This will activate it. But I will say, if it doesn't have a positional status, it will not give the result of 1, 4, and 11. It will give the result of 5th house and 12th house. But what event will happen in his life? What event will happen in his life? Event will happen according to the significance of 5, 12 and 2, 7, 11. Which I need to teach you. I have not talked about the significator of the planets yet. But this is a broad how this theory will go. The planet to nakshatra involve the particular houses. Through sublord, it will commit, and to subslot, it will give a confirmation. Maybe it will give you, it will not 2nd house, 5th house, 7th house, or 11th house. Maybe I'm just assuming it. Just for this is an example. Maybe the sublord is Saturn here. This is a basic concept of Cuspal interlink theory. There's nothing else behind. Okay. The nakshatra is Mars. Mars involved 5th and 12th house. Commitment is given by the sublord, that is Mercury. It's talked about 2, 7, 11 houses. And the confirmation is done by the sublord. Maybe it's the Saturn, so it will involve, I'm assuming it may involve 2, 5, 7, 11. So commitment means promise. Yes. So promise through sublord. I said the Jupiter is giving such a result in his life. Suppose Jupiter is a sublord of ascendant in his chart. Suppose. So Jupiter will give these results in his lifetime. It means when the Dasha will come. For the ascendant, it's still my lifetime. Ascendant will give all the events of my life. All the events. If ascendant is not showing marriage, marriage will not happen. You need not to go into the further to read whether the marriage is destined or not. In Vedic astrology, because you are in the initial stage of Vedic astrology, there are certain combinations which are there, which I have discovered also, to bluntly say the marriage will not happen in the native's life. But for that, we need to go to divisional charts. I need to analyze D9 chart. I need to analyze D81 chart, D30 chart, which you're not aware with this. But there are certain combinations that a sure shot combination that marriage will not happen. Okay. But you see, what is the difference between Vedic and stellar?
In Vedic, Maharishi Pasa said it's a science of possibility, not a prediction. In his first shloka in Brihaspatara Shastra, what Rishi said is it's a science of possibility, not prediction. But what KP astrology said, what Krishnamurti ji said, it is a predictive sign, Krishnamurti. If the event is this time, this in which event will happen, which dasha, it will be this time. It's a keep it very simple. Ascendant lord. If your sun ascendant sub lord is Jupiter, Jupiter will decide what will happen in his life. That's all. If you're going to study his marriage, when he'll get married, first see the promise. I said it's a promise and potential of my life. What is astrology? It's a promise and potential of my life. Promise is seen by the ascendant only. If ascendant is not promising the event will not happen in native life. That's all. It's finished. If ascendant promise it, now we see the potential when it will happen. Then we'll go to the dasha lord, in which bhukti the event will happen. It's very easy to find out the event of the particular native. But the game is not over yet. It's just the dasha antardasha will sell the significator. We need to allow the transit also. When the transit is promising that particular event, that will come in later stage. I will teach you everything. But I will give you a very broad example that how the planet will give result in this study. The planet is Jupiter. Jupiter is involving 1-4-11, but I will not see the Jupiter here. Presently, forget 1-4-11. Jupiter is in star lord of Mars. So Mars will give the results to this native in Jupiter Dasha. That's all. Whether it's involving all the houses 1, 2, 3, 4, it will not involve. Rahu and Ketu is exceptional. So all the houses can be involved. But in like Mars, it will be the lord of 2 houses and placed in 1 house. Only 3 houses will involve. Maybe the aspect of any planet in the Mars that will also involved in this. But I will you need not to calculate that. That will available in the software. I will tell you how. You can see the software now. अच्छा ठीक अच्छा you can see the software now. Okay. I want to know if this native is running with Jupiter period, what will be the result for the Jupiter period? Or what is the promise this native come from in his life from the past life? Okay. You see on your left hand side there's a column of planetary positions. You can see? Yes. Okay. Sun is the ruling planet. Sun is where? Sun is in the Gemini sign right now. In this chart, Sun is placed in Gemini sign. You can see in the 6th house, Sun is placed in Gemini sign. Sun कहाँ बैठा हुआ है? Sun बैठा हुआ है Gemini sign के. So Sun is जो ruling है, that is in Mercury, Gemini sign. Okay. Sun कौन से नक्षत्र में है? Sun is a nakshatra of Jupiter. Sun जो है इस STL में star. This is a nakshatra. जो हम star lord की बात कर रहे हैं, that is written STL. If you come over here, अगर आप नीचे आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, इससे लिखा प्लैनेट एंड नक्षत्र. अभी मैं कर्सर इस आप मेरा कर्सर देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ प्लैनेट एंड नक्षत्र. सन जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में अंदर है. अगर आपको नक्षत्र के बाद में लॉर्डशिप नहीं मालूम है तो आपको रीड करना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र को कौन सा प्लैनेट रूल करता है. अगर सन पूर्णवसु नक्षत्र में है, इसका मतलब सन जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में है, क्योंकि पूर्णवसु इज रूल्ड बाय जुपिटर ओनली. तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो सन किसके रिजल्ट देगा? सन तो जुपिटर के रिजल्ट देगा.
अब हमने फिर उस जुपिटर के 9 डिवीजन करे तो वो आ गया, मून आ गया। मून कंफर्मेशन दे दे, कमिट कर देगा उन हाउसेस, और कंफर्मेशन सब लॉर्ड कर देगा जो जुपिटर ही है। दिस इज द वे टू सी द रनिंग दशा, की दशा को कैसे रीड करना है। अब आप कहेंगे इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये मेरे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, क्योंकि मुझे इन सब चीजों को यहाँ पे नीचे कस्पर पोजीशन में देखना पड़ेगा। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाई। सन जुपिटर के नक्षत्र में है तो जुपिटर कस्पर पोजीशन में कहां पर आ रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो गया। एक क्वेश्चन आपने उस दिन पूछा था कि भावा चार्ट का क्या रोल है स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में। दिस इज द मेन क्वेश्चन यू आस्क्ड मी ऑन द फर्स्ट और सेकंड क्लास। आपने पूछा था, किसी ने पूछा था भावा चार्ट। देखिए, जब भी हम भावा चार्ट को रीड करेंगे, हमें भावा चार्ट को दशा में रीड करना। आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर राजयोग भी भावा चार्ट में देखते हैं, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट भी भावा चार्ट में देखते हैं। मैं उनसे एग्री नहीं हूं अप टू सम एक्सटेंट, बट हम लेट इट बी वेरी बेसिक, इसको बेसिक रखते हैं कि जो दशा है रीड की जाएगी, वो दशा रीड की जाएगी बेसिकली हमें भावा चार्ट देखिए। अब देखिए, भावा चार्ट में सन जो है अपने जुपिटर के नक्षत्र में रिजल्ट देगा। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, सॉरी, जुपिटर भावा चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो जब इस नेटिव की सन की दशा चलेगी, ये इसका सेकंड हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिव कर देगा। क्यों? बट राशि चार्ट में तो थर्ड हाउस में है। मगर जो जुपिटर की डिग्री है, अगर आप जुपिटर की डिग्री देखेंगे तो यहाँ मेंशन्ड है 14 डिग्री 18 मिनट्स का जुपिटर है। मैंने अपनी सेकंड क्लास में बताया था, दिस इज द अनइक्वल डिवीजन। कस्पल इंटरलिंक में प्लैनेट के हाउसेस के अनइक्वल डिवीजन है, इक्वल डिवीजन नहीं है। वैदिक में इक्वल डिवीजन। तो आप अगर वैदिक से पढ़ेंगे, अब राशि चार्ट पढ़ेंगे, जुपिटर कोई बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, सन बैठा हुआ है सिक्स हाउस में, तो सन की दशा में आएगा तो सन सिक्स हाउस को एक्टिवेट कर देगा, एट्थ हाउस का लॉर्ड है, इसको एक्टिवेट कर देगा। और चलो जुपिटर का नक्षत्र है, थर्ड हाउस को एक्टिवेट कर देगा। बट भावा चार्ट ने सारा खेल ही बदल दिया इसके। भावा चार्ट में सन में तो इतनी प्लेसमेंट चेंज नहीं करी, मगर नक्षत्र ने प्लेसमेंट चेंज करी। हम लिमिट में रहेंगे। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे ज्योतिष के अंदर, जब भावा चार्ट को मैं और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो स्टेलर का पार्ट नहीं है, मगर कई जगह में, जब अभी तो आपको वैदिक भी नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं है कि आपको एनुअल चार्ट कैसे देखना है भाई। एनुअल ताजिक चार्ट कैसे देखा जाता है, तिथि प्रवेश चार्ट कैसे देखा जाता है, जो जगन्नाथपुरा में दिए हुए हैं, मगर हमें पता नहीं कैसे रीड करना। जब उसको रीड करेंगे तो भावा चार्ट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। मगर वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, मगर कभी हम फ्यूचर में थोड़ा फर्दर एडवांस ज्योतिष की बात करेंगे तो हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। अभी के लिए बेसिक समझिए, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब दशा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें भावा चार्ट को फोकस करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है प्लेसिडिस सिस्टम में काम करता है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी इसी सब्जेक्ट पे काम, वो राशि चार्ट को फोकस नहीं करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही राशि चार्ट को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, उस दिन आपने क्वेश्चन पूछा था इंपॉर्टेंस क्या है भावा चार्ट की, दैट्स व्हाई भावा चार्ट इज इंपॉर्टेंट। वी नीड टू एनालाइज द दशा फ्रॉम भावा चार्ट। देखिए, शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रेजेंट कर दिया जो आपने कभी देखा ही नहीं है। यू हैव नेवर सीन दिस सॉफ्टवेयर बिफोर, ओके, बट आई विल मेक इट वेरी I have सिंपल। seen the KP one. ओके, KP also looks almost the same. हाँ, केपी इज ऑल्सो सेम, बट इन इसमें ना थोड़ा इलेबरेट है दिस सॉफ्टवेयर। Yeah. So यू it सी, has too many. मैं आपको बताता हूँ कैसे इलेबरेट किया गया। देखिए, यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन क्या हो गई, ऊपर ना तीन वो है आइकॉन, बेसिक डाटा, कस्पल इंटरलिंक, रोटेट चार्ट। यू कैन सी इट, जो कर्सर मैं लिंक कर रहा हूँ। अगर मैं कस्पल इंटरलिंक पे प्रेस करता हूँ ना, इट विल गिव यू अ ब्रॉड आइडिया व्हाट द दशा विल गिव यू। सिंपल कर दिया मैंने भाई। मैं इंस्टेड ऑफ मैं वहां से कस्पल पोजीशन में देखूंगा प्लैनेट कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, इट विल टेक माय टाइम। बट मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सन को देखूंगा। फर्स्ट प्लैनेट सन, सन ने अपने नक्षत्र के थ्रू ये हाउसेस को इन्वॉल्व कर लिया। कमिट किसने, सब लॉर्ड ने कर लिया, मून का सब लॉर्ड था। So we are taking common, right?
it's by chance it's happening, this is chance. एंड द सब लॉर्ड भी जो है कंफर्मेशन है, वो भी जुपिटर आ गया। तो अब ये जो कोरूलिंग है, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड विल गिव द इवेंट इन सन पीरियड, दैट्स ऑल। अगर मैरिज के सिग्निफिकेटर प्रोमिनेंट हाउसेस इन्वॉल्व नहीं है सन के पीरियड में, तो सन का पीरियड मैरिज नहीं देगा, दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश। आपको आगे देखना पड़ेगा दशा को। जब मैं दशा प्रॉमिस बताऊंगा कि कैसे इवेंट आपको डिसाइड करना है, ये तो ब्रॉड आइडिया दे दिया मैंने कि हाउ दिस विल वर्क। कि अगर मेरे को दशा पढ़नी है, मेरे को सिर्फ देखना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कॉलम है पोजिशनल स्टेटस, जो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। ये 168 है, तो जो है सन है इन 168 का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि सन जो है 6th हाउस में प्लेस्ड है, हमने देखा था। आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। भावा चार्ट में भी जो सन है 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो अगर पोजिशनल स्टेटस होगा तो सन उस हाउस का भी रिजल्ट देगा जहां वो प्लेस्ड है। अगर पोजिशनल स्टेटस नहीं है तो सन उस हाउस के रिजल्ट नहीं देगा जहां सन प्लेस्ड है। बट वैदिक में आप उस हाउस को भी कंसिडर करते हो जहां पे वो प्लैनेट प्लेस्ड है, जहां बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट डिफरेंट है। ये पॉइंट, टोटल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, क्योंकि यहां हमने नक्षत्र बेस्ड थ्योरी है। वैदिक में एक प्लैनेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, कस्पल के अंदर हमने एक नक्षत्र को इंपॉर्टेंस दी। तो आई मेक इट वेरी सिंपल। मैं दोबारा वही वाला चार्ट खोलता हूँ, ये थोड़ा मैंने आपको समझाने के लिए। अगर आपने सॉफ्टवेयर वे नहीं लिया है तो आप एक बार करुण जी से बात करके, यानी जैसे भी सॉफ्टवेयर आ सकता है ले लीजिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस में करवाऊंगा इसी सॉफ्टवेयर में करवाऊंगा, आपके पास होना चाहिए ये सॉफ्टवेयर। ओके, अब मैं उसी पुराने पेज पे आ जाता हूँ टू अंडरस्टैंड कि मेरे को रिजल्ट देना क्या है जुपिटर। आई सेड कस्पल इज अ थ्योरी ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड कंफर्मेशन। एक प्लैनेट अपने नक्षत्र से इन्वॉल्व करेगा, जिसको हमने कहा स्टार लॉर्ड। एक प्लैनेट अपने नक्षत्र से किसी भी प्लैनेट को इन्वॉल्व कर लेगा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है। एज्यूमिंग कि जुपिटर मंगल के नक्षत्र में है, मार्स के नक्षत्र में है, तो मार्स को इन्वॉल्व कर लिया जुपिटर। कमिट कौन कौन से हाउसेस होंगे वो सब लॉर्ड बताएगा। अब वो सब लॉर्ड कौन बना? मरकरी बन गया। ठीक है, अब मरकरी जहां जहां का हाउसेज है वो कंफर्म कर दिया उसने इवेंट लाइफ का, कमिटमेंट है ना भाई। अब मैंने मरकरी के भी 9 डिवीजन कर दिए फर्दर, वो आ गया सैटर्न, आ गया प्लैनेट। सैटर्न ने क्या किया? सैटर्न कह रहा है कि आई एम इन्वॉल्विंग 2, 5, 7 एंड 11। तो सैटर्न ने कंफर्मेशन दे दिया मेरे को कि जो आपकी लाइफ में इवेंट ये डिस्टाइंड है जुपिटर के पीरियड, दैट्स ऑल। अब ये कौन से हाउसेस का सब लॉर्ड है? ये तो जुपिटर भी तो किसी हाउस का सब लॉर्ड हो सकता है ना। मान लीजिए हम प्रोगेंसी देखें तो 5th हाउस का सब लॉर्ड भी हो सकता है, लगन का भी सब लॉर्ड हो सकता है। 12 ज़ोडिएक हाउसेस में किसी भी हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर हो सकता है, जो प्रॉमिस बताएगा उसे। मगर दिस इज अ ब्रॉड, एक बिल्कुल मैंने आपको इजी सा मेथड बता दिया कि हम इसे कैसे रीड करते हैं, क्योंकि कस्पल पोजीशन में क्या होगा आपको कंफ्यूजन होगी ढूंढने में, इसलिए मैंने नेक्स्ट लेवल ही बता दिया कि आपको कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है इसको लेकर। देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग, आई एम अ टीचर, आई एम ए कंसल्टेंट ऑल्सो। मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ, आई डू कंसल्टेशन। तो मुझे पता है इन फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। देखिए, एक जो डॉक्टर है जो पढ़ाता है ना, वो सर्जरी नहीं करता, ही डोंट नो हाउ टू डू द सर्जरी, उसको पढ़ाना आता है खाली। यू गॉट अ पॉइंट? अ टीचर कैन बी वेरी गुड टीचर, मगर उसको प्रेडिक्शन करनी नहीं आती ना, उसको वीकनेस नहीं पता कि उस थ्योरी में कहाँ कहाँ हमें कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम ना आए उस हिसाब से मैंने इस कोर्स को डिजाइन करा है कि आपको बस क्वेश्चन ही ना रहे कोर्स करने के बाद, दिस इज माय क्वेश्चन, नहीं रहेगा क्वेश्चन। मैं साथ साथ में प्रेडिक्शन आपके चार्ट में करवाने वाला हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आप सॉफ्टवेयर को जरूर ले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब मैं थ्योरी खत्म हो जाएगी, मैं मैक्सिमम फोकस आपको प्रेडिक्शन कराने में सिखाऊंगा। जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफाइड कर लेंगे, आप अपना कैसे करेंगे बर्थ टाइम, इवेंट तो मैच करेंगे, वो जब मैं सिग्निफिकेटर सिखाऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में 1-2-3 क्लासेस में हम सिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि वही सिग्निफिकेटर आपके हरारी प्रश्न कुंडली में भी काम करेंगे। वही जो सिग्निफिकेटर है वो प्रश्न में भी काम करेंगे, आपके नेटल चार्ट में भी काम करेंगे।
और जब आप BTR बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे तब भी वही काम करेगा। तो इट्स वेरी सिंपल, बट आपको इम्यून होना पड़ेगा थोड़ा इस चार्ट को लेके, भाई हाउ टू यूज इट। तो जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, यू अनेबल टू, आप नहीं कर Yes. पाओगे उन चीजों को यूज नहीं कर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रॉड आइडिया दिया मैंने कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट विल वर्क। आई विल रिपीट एंड मेक इट सिंपल। नक्षत्र थ्रू यानी थ्रू स्टार लॉर्ड द प्लैनेट इज इन्वॉल्व्ड। अगर मान लीजिए जुपिटर जो मार्स के नक्षत्र में है, अगर 7th हाउस की बात नहीं करता है तो मैरिज का इवेंट नहीं होगा भाई, उस दशा में नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस है जो मैंने पोजिशनल स्टेटस की बात कर रहा हूं, जो मैं नेक्स्ट आपको क्लास में क्लियर करूँ। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट में क्लियर करूंगा क्या। अच्छा, एक होता है डायरेक्ट लिंकेज, वो भी मैं बाद में लेटर क्लियर करूंगा आपको, जब आपको मैं थोड़ी सिग्निफिकेटर बता दूंगा मेन में, तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर एक मेन कस्प इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मान लीजिए मैंने बोला कि जुपिटर मार्स के नक्षत्र में मगर 7th हाउस इन्वॉल्व नहीं है, तो मैरिज नहीं होगी। 7th हाउस इज अ प्राइम कस्प फॉर द मैरिज, बट सब लॉर्ड कहीं ना कहीं 7th हाउस दिखा रहा है हमारे को, तो ये डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, ये इनडायरेक्ट लिंकेज दिखाते हैं। यानी मंगल के पीरियड में इस नेटिव की मैरिज, जुपिटर के पीरियड में इस नेटिव की मैरिज का इवेंट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैरिज के लिए जो मेन हाउसेज हैं दैट इज 2, 7 एंड 11। मैंने आगे सब पीपीटी बनाया हुआ है, तो आपको सब मिलेगा, आप चाहेंगे तो लिख भी लीजिएगा, मगर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक शॉर्टकट टूल भी दूंगा लास्ट में, आप कि आपको कुछ भी यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस सॉफ्टवेयर, आई वोंट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। वो ठीक है ना, उसमें आपको जब सब कुछ दिख जाएगा आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं काम करना कैसे काम करना। गॉट इट करुण जी, आप सुन रहे जी हैं? सर। अभी पॉसिबल है आपके लिए यस दोबारा दोबारा जनरेट करना 5-7 मिनट के बाद का? और सर आई विल ट्राई सर। एक्चुअली ना सर मैं ना थोड़ा फॉरेस्ट के बीच में हूँ, आई एम इन द फॉरेस्ट बेसिकली। अच्छा, ओके ओके। तो सर देयर इज सब कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, रेन इज देयर। अच्छा, फॉरेस्ट है बट तो सर आई विल कोई डेफिनेट। कोई केतु का अंतरा तो नहीं चल रहा आपका? सब पीरियड या प्राणा दशा केतु की सर तरफ? मेरे को डॉग्स भी, मेरे को सर जैसे ही मैं एंटर किया हूँ होम स्टे में, जी तो सर डॉग्स आए मेरे पास, हाँ, मेरे तो को केतु, वेलकम, मेरे ऊपर चढ़ अरे रहे। अभी सिंपल, द फॉरेस्ट इज डॉग, और सॉरी फॉरेस्ट इज केतु। यस फॉरेस्ट जो है जी वो जी। केतु है। आप केरल में रहते हो, केतु एक्टिवेट होगा तभी केरल जाओगे, जाओगे नहीं फॉरेस्ट देखोगे ही नहीं, आप यू विल नॉट विजिट फॉरेस्ट। यू सी तो सर मैं शिमला में हूँ, आई मैंने बोला अभी शिमला में हाँ हूँ। हाँ, आई नो दैट यू आर इन द शिमला राइट नाउ, तभी सिग्नल की जी जी। प्रॉब्लम आ रही है आपको, है ना? हाँ जी तो सर। कोई बात नहीं, उसमें कोई बट आई दिक्कत विल नहीं है। जनरेट सर, अभी मैं करता हूँ, जनरेट करता हूँ, मैं आप भेजता हूँ कर मैसेज। लीजिए, नहीं तो फिर मैं जनरेट कर लूंगा, ठीक है ना? डन डन सर, डन आप डन डन। कोशिश कर लीजिए 5 मिनट के बाद एक आईडी जनरेट कर दीजिए, अगर हो गया ओके हो जाता है, नहीं तो मैं कर ओके, लूँ, ठीक है? तब तक मैं मैडम को आगे ठीक है पढ़ा। डन ठीक है, डन डन, ठीक है सर। तो यू हैव सम क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड, कैन यू टीच मी what I teach you today till in this last 15 minutes? How to read dasha, how to read planet. You're asking me, sir? Yes, I'm asking to you. Varun ji knows about this Oh, calendar Joy. I'm not asking to him, yes, I'm asking to you. yes, sir. So first we need to look at the planet, Right, and then the Mahadasa planet, whichever is the planet, and then we look at the star lord first, and then we see what houses involved and which houses the star lord is signifying, like in the chart itself, and then we'll move on to sublord, and then we do the same thing for the sublord. So which houses it involves, like, and then the sub-sublord. So sub-sublord will give the confirmation, but the promise, so by looking at the sublord, we can figure out whether the event of marriage or the event of whatever yes, childbirth is there or not. yes, Then we move on to the last step, which is confirmation. right. If the sublord is not confirming, then we don't go to the confirmation, the last part. There is no point. Okay, very good. You see why confirmation is important. Why? Sometime what happen कि जो sublord है ना, वो event दिखाएगा भी और denial भी दिखाएगा. Suppose 7th house is involved in sublord, it may involve 6th house also. 6th house is denial of the event because it's 12th from the 7th house.
That means marriage can happen and then divorce also can happen. No. No? Because in commitment, for sublord may confuse us whether event will happen in this dasha or not. By 6th house is 12th from 7th. It's a denial of marriage. For the confirmation, we need to need sublord. If the 7th house is seen in sublord and 6th house is absent, this means the event of marriage will happen. That why sublord is very important. You see, KP ने काम किया sublord तक. वो मैंने क्यों आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से बताया था कि sublord और sublord में कितना डिफरेंस है, कितने मिनट्स का डिफरेंट है. सन का पीरियड sublord होगा तो 3 मिनट में चेंज ही नहीं होगा, मगर जो sublord होगा वो 1 मिनट में बदल जाएगा. तो हमने उसके आगे भी डिवीजन करे, हमने sublord के भी डिवीजन करे 4SL थ्योरी. जब मैं रेक्टिफिकेशन सिखाऊंगा मैं वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, मगर मैं इसलिए आगे नहीं जा रहा क्योंकि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है मुझे कि 4SL में क्या कौन सा प्लैनेट है वो कैलकुलेट आप मैनुअली कर नहीं पाएंगे, तो उसका बेनिफिट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बट आई विल, जब हम BTR करेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, देन आई विल ट्राई टू एनालाइज करेंगे कि सब लॉर्ड क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर. क्यों? क्योंकि आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपको मिली सेकेंड का लेके जा, तभी तो. क्यों? क्योंकि जो 4SL का जो सब लॉर्ड होगा वही तो आपको डेस्टिनी बताएगा. प्रॉमिस क्या है लाइफ में, वही तो. अगर ट्विंस का बर्थ है तो सब लॉर्ड विल बी चेंज. तो डेस्टिनी चेंज हो गई उस नेटिव की, उस इंडिविजुअल की, उस चाइल्ड की डेस्टिनी. तो देखिए कब बन जाती है, व्हेन द चाइल्ड टेक बर्थ टाइम पे ही डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है उस नेटिव, एक इंडिविजुअल. वैदिक में यहाँ प्रॉब्लम है. There are tools in Vedic also, मगर आपको उसमें अभी तो नहीं, मे बी आफ्टर years so you will able to. कभी आप जुड़े रहे मेरे साथ तो I will teach you कि how to see the twins का difference कैसे देख सकते हैं. Yeah, I know somebody like they have twins and then and they do not have the financial status to maintain 2 girls, so they gave away one child to a rich couple. So one child is in the rich house, and then with the other child is with the mother. She doesn't have comforts and anything. I mean, but she's having her mother with her. But then the other